Hello students. In this lecture, we will discuss our last blotting technique, that is Western blotting. In last two videos, we have discussed Northern blotting and Southern blotting. Okay. So in this lecture, we'll focus Western blotting. On Western blotting, it is used for detection or analysis of the protein. So Western blotting in the year 1981 is an immunoblotting technique which rely on or depend on the specificity of binding between a protein of interest and a probe. Now see, this technique is different from northern and southern blot technique. Okay, how it is different? When we will see the procedure of Western blot, that time we will come to know that how Western blotting is different. So in this technique, in this technique we use a probe, but these probes are this work as a antibody, means here probe is a antibody. Okay, primary antibody and secondary antibody, like this antibodies we use, and we find our protein of interest. Secondly, this technique uses Asst.Prof.P.K.Gakkhad technique. Okay, जैसे southern blot northern blot में agarose gel electrophoresis थी, in this technique Asst.Prof.P.K.Gakkhad technique is involved, that is sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. Let's start with the procedure or steps. It is used to identify protein in the cell or protein expression in the cell, and it can detect very minute amount of protein present in the cell or present in the sample. Okay, so so let's start with the steps involved in the Western blotting. Every technique involves generally three basic steps: extraction or isolation, second is separation of fragment, third is blotting. So these are the three major techniques, और उसके बीच में intermediate three major steps, और उसके बीच में intermediate steps involved होते हैं. So our first step is extraction of protein content from the cell. We have to extract protein content from the cell. Okay, so for extraction, what we will do, we will take this cell, we will treat that cell with detergent, like sodium dodecyl detergent. Okay, so we will treat that cell with detergent. By treatment, that cell will break down, and break down the cell means all the cytosolic components will come out. Okay, all the components will come out when we will break the cell. Then we will perform centrifugation of that components. Okay, so after centrifugation, supernatant and pellet will come. Okay, to the pellet, organs or organelles will settle down, and to the supernatant our mixture of protein will there. So like that we will isolate our protein, or we will extract our protein. Okay, so this is the first step, extraction और आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द सेल. क्या किया हमने, सेल ली, सेल को ब्रेक किया. कैसे ब्रेक किया, बाय यूजिंग द डिटर्जेंट. ओके, जब सेल को हम ब्रेक करते हैं, उसके ऑर्गेनल्स कंपोनेंट, साइटोसोलिक कंपोनेंट्स ये बाहर आएंगे. ऑफ दैट कंपोनेंट्स वी विल परफॉर्म सेंट्रीफ्यूगेशन. तो दो लेयर्स फॉर्म होंगे, सुपरनेटेंट एंड पेलेट. पेलेट कंटेन योर ऑर्गेनल्स एंड सुपरनेटेंट में होगा मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स. तो वो प्रोटीन सैंपल वी विल यूज फॉर द फर्दर टेक्निक. ओके, सो अभी हमें प्रोटीन मिक्सचर मिल चुका है. सो अवर नेक्स्ट स्टेप इज सेपरेशन. ओके, सो वी विल परफॉर्म सेपरेशन बाय we will perform separation by sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis, that is Asst.Prof.P.K.Gakkhad. अब Asst.Prof.P.K.Gakkhad टेक्निक हमने एंजाइमोलॉजी में भी स्टडी किया है, सो यू कैन रिलेट टू दैट. इन शॉर्ट आई विल टेल यू व्हाट Asst.Prof.P.K.Gakkhad डज. तो अब हम सेपरेट प्रोटीन कहाँ से करेंगे, बाय Asst.Prof.P.K.Gakkhad. दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग protein mixture from each other.
ओके, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन मिक्सचर फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर जेल जो यूज की जाती है, इट इज द अक्राइल अमाइड। Why? Because acryl amide can attach with each other. Okay, molecules of acryl amide can attach with each other and can make cross linking and form the polymer. Okay, that is the characteristic of acryl amide gel. So separation is done on the basis of size or shape and mass, also charge. Okay, so separation is done on the basis of size, shape and mass. So according to that, the molecules are being separated. Now this gel carries pores in between. Okay, this gel carries pores in between. How the protein molecules are separated? If protein is small, it will migrate further or it will migrate faster. Okay, and if protein is large, that will not migrate but it will stop in between. Why it will stop in between? Because जेल कंसिस्ट ऑफ, ये पॉलीअक्राइल अमाइड ये एक दूसरे से क्रॉस लिंक होते, तो पोर्स आर बीन फॉर्म्ड ऑन टू दैट मैट्रिक्स। ओके, तो अगर प्रोटीन का साइज ये larger है, it will not able to migrate, it will stop somewhere or it will get attached into that pore. Okay, and smaller protein will migrate fast. So that is the simple principle how the protein molecules are being separated by using SDS by using SDS page. Okay, now in the third step what we will do? Blotting. Transfer of gel component or transfer of gel which contain the separate molecule of protein is shifted toward the blotting technique, that is onto the nylon membrane or nitrocellulose membrane. ठीक है, तो इट इज बीन सेपरेटेड ऑन टू द ब्लॉटिंग। अभी ब्लॉटिंग में यहाँ पर जैसे हमने नदर्न और सदर्न ब्लॉट में देखा कि वी प्रोवाइड द ट्रे एंड स्पॉन्ज ग्लास सपोर्ट एंड देन वी पुट आवर सेपरेटेड मटेरियल, तो ये सब नहीं है यहाँ पर। व्हाट इज देयर? that nylon membrane which contains the, now we have transferred that gel containing separated protein onto that nylon or nitrocellulose membrane. Now what we will do, imagine the diagram. Okay, let me show the diagram. Suppose now consider the inverse, or consider the we can say side position of that membrane and gel. Okay, side view आप consider कीजिए. This is the membrane. Okay, this is your membrane, that is nitrocellulose membrane or nylon membrane. Okay, onto that membrane there is your gel. Okay, onto that membrane there is your gel which contain the separated fragments. ठीक है, तो यहाँ पर है निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड. ओके, onto the top there is negative charge electrode, at the bottom there are positive charge electrode. movement will be from negative to positive. okay, movement कैसी होगी? from negative to positive of that we can say of that मॉलिक्यूल्स जो जेल में है. ठीक है, तो मूवमेंट जैसे डाउनवर्ड पोजीशन होगी फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, दिस RNA molecule, sorry, protein molecules which are on the gel will come to the nitrocellulose membrane or will get transferred onto the nitrocellulose membrane. ठीक है, तो सेपरेशन ऐसे हुआ था. ओके, कुछ इस तरीके से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स SDS पेज में रन हुए थे. तो ये जो पोजीशन है, स्ट्रेट पोजीशन, वो हमने साइड व्यू मैंने आपको दिखाया. ओके, दिस इज द स्ट्रेट पोजीशन, और इस सेकेंड डायग्राम में मैंने आपको साइड व्यू दिखाया. तो हाउ द protein will migrate from upward to downward and automatically from gel it will get transferred onto the membrane, because this gel and the membrane are connected to each other in a tight manner. Okay, so the movement will be from upward to downward. Let me erase this. Okay, now once the RNA, sorry, not RNA, protein, once the protein molecules
have shifted or have placed onto the nitrocellulose membrane, the current is applied, okay, or there will be once means protein molecule are shifted onto the nitrocellulose membrane, transfer processes is been completed. Now the next step हमने southern और northern blotting में देखा कि probing and hybridization, okay. In the previous technique we saw that there was addition of the probe और वो probe complementary sequence मतलब अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ बाइंड होते थे, तो उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते थे, बिकॉज प्रोब सीक्वेंस एंड आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट सीक्वेंस उनका कॉम्प्लीमेंट्री होता था, वो दोनों बाइंड होते थे, हाइब्रिड तैयार होता था, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन, ओके. तो ये प्रोसेस हमने नॉर्दर्न और सदर्न ब्लॉटिंग में देखी. बट इन दिस प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, okay. Hybridization is not possible. Why? Because it's protein. So instead of using, or so we use detector that can bind to our protein of interest. How gene of interest is there, in the same way protein of interest is there, which we want to analyze, which we want to study or which we want to detect. तो यहाँ पर डिटेक्टर की तरह कौन काम करता है, यहाँ पर डिटेक्टर की तरह एंटीबॉडीज काम करते हैं, ओके. So we use antibodies instead of using probe, we use antibodies, okay. So these antibodies act as the detector and these antibodies are specific, okay. These antibodies are specific to our target protein or protein of interest. This antibody can be specific, that can bind to our specific protein. ऐसे antibodies हम use करते हैं, okay. So we design specific antibodies against our target protein. But before doing this technique, we perform the blocking method. Okay, ये antibodies add करने से पहले हम blocking method perform करते हैं. Now what is blocking? Blocking is the process. Here we apply the blocking agents. Okay, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम blocking agents apply करते हैं. तो blocking agents like milk और BSA. BSA stands for bovine serum albumin. क्या है bovine serum albumin? It is a protein. Okay, bovine serum albumin, it is used as a protein concentration or it is a protein. तो यहाँ पर हम as a blocking agent BSA और milk we use so that it covers areas, most areas it can cover. तो ये जो blocking agent है, ये blocking agent हम नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन में हम प्लेस करते हैं so that it can cover the pores, okay. It can cover the other components present onto that nitrocellulose membrane, okay. It doesn't bind to the protein. ये प्रोटीन को बाइंड नहीं करते, प्रोटीन जो सेपरेटेड प्रोटीन हुए उनको बाइंड नहीं करते, बट अपार्ट फ्रॉम द प्रोटीन, अपार्ट फ्रॉम द एंटीबॉडीज, दे बाइंड टू द अदर membrane, okay, or other components of the membrane to block, okay. So the name is given blocking and the blocking agents are milk or BSA, ठीक है. And then we add our antibody, okay. तब हम उसके बाद एक बार ब्लॉकिंग होने के बाद हम अपने एंटीबॉडीज ऐड करते हैं, ओके. वाई वी यूज ब्लॉकिंग? बिकॉज इट प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी टू द मेम्ब्रेन. मतलब एंटीबॉडी टारगेट क्या है कि एंटीबॉडीज ने सिर्फ प्रोटीन को बाइंड करना चाहिए. इट मस्ट नॉट बाइंड टू द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन और अदर पोर्स ऑफ द मेम्ब्रेन. सो वो पोर्स हमें ब्लॉक करना ज़रूरी है, इसीलिए हम ब्लॉकिंग एजेंट यूज़ करते हैं जस्ट टू प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी टू द मेम्ब्रेन, ओके. मतलब एंटीबॉडी सिर्फ कहाँ बाइंड होंगे? टू द टारगेट प्रोटीन. सो वी यूज़ द ब्लॉकिंग टेक्निक, ओके. तो ब्लॉकिंग हो गया, उसके बाद वी एडेड स्पेसिफिक एंटीबॉडी. व्हाट विल हैपन? एंड यस, वन मोर थिंग, मल्टीपल एंटीबॉडीज कैन बाइंड टू दी वन प्रोटीन. दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. Sorry. Then we apply or then we add our antibody, as I told you, primary antibody, okay. So this primary antibody are very specific to our target protein. What this primary antibody do? It will not show results, okay. This primary antibody, ये क्या हो गया?
टारगेट प्रोटीन को बाइंड हो जाएंगे. कि कुछ इस तरीके से वो बाइंड होंगे. सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम जो रेक्टेंगुलर शेप है, दिस इज आवर रेक्टेंगुलर शेप इज आवर नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन. ओके, एंड टूवर्ड्स दैट आवर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इज बीन प्रेजेंट ऑन टू दैट मेम्ब्रेन. और उसको बाइंड हुआ है हमारा प्राइमरी एंटीबॉडी, या फिर आप उसे कहेंगे फर्स्ट एंटीबॉडी. ओके, सो एज आई टोल्ड, आवर एंटीबॉडी इज वेरी स्पेसिफिक टू आवर प्रोटीन, because we means yes, it is very specific to our protein, so it gets bind to that protein. Okay, now this primary antibody, it doesn't give any result, or it doesn't show any result. ओके, सो ये कुछ हमें रिजल्ट नहीं दिखाता. सो वी एड सेकेंडरी एंटीबॉडी, बट बिफोर एडिंग सेकेंडरी एंटीबॉडी वी वॉश आउट अनबाउंड एंटीबॉडीज. ओके, प्राइमरी एंटीबॉडीज जो बाइंड नहीं हुए हैं, जो स्पेसिफिक नहीं थे, डेफिनेटली जो स्पेसिफिक नहीं थे वो बाइंड नहीं होंगे. ओके, तो वो अनबाउंड रह जाएंगे, एंड देन अनबाउंड एंटीबॉडीज आर बीन वॉश्ड अवे, एंड आफ्टर वॉशिंग प्रोसेस द सेकेंडरी एंटीबॉडीज आर added. Okay, this secondary antibodies, what they will do, they will get attached to the primary antibody. Okay, you can see in the diagram, to the first antibody secondary antibody is being attached, right? अब ये secondary antibody कैसे attach हुए हैं? to the FC region of the first antibody. द बेसिक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया होगा. ओके, सो टू द FC region ऑफ फर्स्ट एंटीबॉडी आवर सेकेंडरी एंटीबॉडी गेट्स अटैच्ड. बट सी देयर इज डिफरेंस इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी. क्या डिफरेंस है? टू द सेकेंडरी एंटीबॉडी द एंजाइम इज बीन लिंक्ड इन ग्रीन कलर जो दिखाया गया है. तो ग्रीन कलर में दैट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम विच कंटेन द एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट. ठीक है, so secondary antibody is enzyme linked. Why it is enzyme linked? Because it predicts the result. Okay, it visualizes the result. Primary antibody bind होने के बाद हमें result नहीं मिला, but when secondary antibody get bind to the primary antibody, to the FC region of the primary antibody, and this primary antibody is directly attached to the protein. ओके, तो अभी हमें सेकेंडरी एंटीबॉडी विच इज एंजाइम लिंक्ड. ओके, विच इज एंजाइम लिंक्ड, इट गिव्स द रिजल्ट और इट प्रेडिक्ट्स द रिजल्ट. ओके, हाउ इट प्रेडिक्ट्स द रिजल्ट? बिकॉज देयर इज एक्टिव साइट प्रेजेंट ऑन टू दैट एंजाइम. तो हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं. Okay, we add the substrate. See, secondary antibody also we have added which is enzyme link. तो हमें पता है कि उस एंजाइम को कौन सा सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड है, राइट? तो यहाँ पर जो एंजाइम स्पेसिफिकली वेस्टर्न ब्लॉटिंग में यूज किया जाता है उस एंजाइम का नाम है HRP एंजाइम. ओके, दैट एंजाइम इज HRP एंजाइम. द फुल फॉर्म ऑफ दिस HRP एंजाइम इज हॉर्स रैडिश peroxidase एंजाइम. ओके, हॉर्स रैडिश peroxidase एंजाइम. ये ऐसा एंजाइम है विच इज अ ग्लाइकोप्रोटीन दैट कैन बी कॉन्जुगेटेड टू एंटीबॉडीज और दैट कैन बी लिंक टू द एंटीबॉडीज, एंड स्पेशली इट इज डिजाइन फॉर द वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक. गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी एंजाइम हमें पता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सबस्ट्रेट भी ऐड करेंगे. तो जो सबस्ट्रेट विच वी आर adding, that substrate is luminol. It is not mentioned in this slide, so listen it properly. The substrate which is added according to this enzyme is your luminol. Okay, luminol. तो ये enzyme क्या करता है? It break luminol and produce light. Okay, HRP enzyme, it breaks the substrate luminol and produce the light. कहाँ produce करता है light? Into the product. Okay, so it produce light as a byproduct and it can be easily detected onto the X-ray film. तो जिस जगह पर light produce हुआ है, it indicates that our protein of interest is present there. Okay, so when light is been produced onto that it is, as the light is been produced, it is detected onto the X-ray film. Okay, so it indicate that our protein of interest is been present. Or sometimes what happen, color is been produced. Okay,
in some cases, or when this reaction is carried out in a vessel, okay, so that time a color is been produced there, and that indicates that our target protein or protein of interest is been present, or sometimes it generate light, and the light production hota hai with the help of this enzyme, or when the reaction is carried out in the vessel, then color is been produced. Okay, so this is the a simple technique, western blotting, and it's different from northern and southern blotting. okay, तो जैसे एसडीएस पेज में मॉलिक्यूल सेपरेट हुए थे, okay, onto the SDS page molecules were being separated, and from that actually the process has been different from northern and southern blotting, because in northern and southern we use agarose gel, and in this we use SDS page. So this is simple method, we will quickly understand it in a diagrammatically manner. ठीक है, तो हम diagrammatically देखते हैं. इस डायग्राम से तो completely प्रेडिक्ट हो जाता है, बट ओके वी विल सी फ्रॉम फर्स्ट द डायग्राम. सॉरी, नाउ सी फर्स्ट स्टेप थी आपकी एक्सट्रैक्शन, और वी कैन से आइसोलेशन ऑफ द प्रोटीन. ओके, हमने प्रोटीन आइसोलेट किया फ्रॉम द सेल बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक. then afterwards we have carried out the SDS page. okay, so electrophoretically transferred protein onto PVDF membrane. now what is this PVDF membrane, or you can say यहाँ the full form of PVDF is polyvinylidene fluoride. okay, ये उसका full form में, it is the membrane which binds the biomolecules, and it has the high binding capacity, and mostly it is used for the protein. okay, so that is your membrane. okay, तो सबसे पहले हमने क्या किया, okay, we will start from the first process was extraction of protein, and we extracted the protein by using the technique centrifugation. Secondly, after extraction we performed SDS page. okay, so SDS page में molecules separate हुए on the basis of size and shape, and we can say charge. okay, so on the basis of this the molecules were separated. तो ये separated protein along with the gel were put on the nitrocellulose membrane or nylon membrane, और यहाँ पर example दिया है PVDF का, which is specially used for protein. either you can use nitrocellulose membrane, is perfect for this technique also. okay, so this was third step, that is blotting. after that when sorry, after blotting what we did, we block the membrane with the BSA or milk. okay, we block the membrane so that हमारे antibodies जो है, okay, just to prevent binding of antibodies to membrane. after that we added the primary antibody specifically protein को जाकर bind होती है, but it doesn't give the result. okay, ये result हमें नहीं देती, so we add the secondary antibody which is enzyme link, and that enzyme was HRP, हॉर्स रैडिश peroxidase enzyme. उसके बाद हमने substrate ऐड किया, that is luminol. okay, substrate and enzyme का reaction हुआ, means this enzyme broke the substrate and it produces the light as a byproduct. okay, so this light production was indication that our target protein is present. if reaction is carried out in vessel, then color is been formed. okay, so that color it indicates that our target protein is been present, that is detected onto the x-ray film. तो इस तरीके से वेस्टर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म की जाती है. ओके, एप्लीकेशंस अगर हम देखें वेस्टर्न ब्लॉटिंग का, तो फर्स्ट एप्लीकेशन इट कंफर्म्स द HIV टेस्ट. Secondly, Western blot is used as the definitive test for bovine spongiform encephalopathy, that is BSE. अब ये क्या है, bovine spongiform encephalopathy? It is the brain disorder in adult cattle. okay, it is the brain disorder in the cattle, and that may spread to the human. but how it may spread to the human? through diseased meat. okay, if human consumes that diseased meat, then it may spread to the
human. So it is the brain disorder of the cattle. Next is some forms of Lyme disease testing employ Western blotting. Means Lyme disease can also be tested using Western blotting. Now what is Lyme disease? These are the symptoms of the Lyme disease are it causes rash, plus flu like symptoms are there, and in many cases there is joint pain and also weakness is also seen. Okay, so these are the symptoms of the Lyme disease, and through Western blotting this disease can be detected or diagnosed. Okay, so these are the applications and procedure of Western blotting. Okay, so in this way we have completed all our three blotting techniques. What were that three blotting techniques? Western blot to detect the protein. Okay, next we saw the northern blot for detection, or we can say to analyze the RNA. And first we have discussed about the southern blotting for study of the DNA, or to analyze the DNA. Okay, so in this way we have completed all our three blotting techniques. Thank you.